these are stress factors. Ectopic pregnancy में जो ट्यूब की है यहाँ 7 weeks लिखा हुआ है, but I prefer less than 6 weeks ताकि risk of rupture ना हो सके. ये बड़ा important है for those of my colleagues who are doing interventions कि जहाँ भी आपने अल्ट्रासाउंड में जाना है 3 points याद रखिए. Shortest travel, don't travel via मोटर से जाएं, छोटे सड़कों से मारें और straight रूट जाएं. And be very fast once you are entering the area. Why? Because ectopics, they are very soft. They are very friable, they are very mobile. ओवरीज है वहाँ को लोहे से नहीं बंधी हुई, तो जब उसके सरफेस पे आए तो इमीडिएट रशिंग करें, अदरवाइज आप पुश करेंगे वो ओवरी एक्टोपिक आगे चलेगी. पुश करें एंड यू आर लाइकली टू ट्रॉमेटाइज इट एंड यू आर लाइकली टू डैमेज इट एंड लीड द परफोरेशन ऑफ द एक्टोपिक वेन. सो वंस यू रीच द सरफेस, बी वेरी स्मार्ट, बी क्विक. नाउ लुक एट दिस लेडी. ये आपको यूट्रस भी ठीक नजर आ रही है और ये इसकी एक्टोपिक बाहर पड़ी है और ये इसकी हार्ट नजर आ रही है. ये हमने उसको जूम किया. देयर आर 4 स्टेजेस आई एम शोइंग यू. One, needle direction into it. Second, injection methotrexate. I always give injection methotrexate first, 0.2 to 0.3 cc right to the fetal heart. And then I sprayed a small amount of amniotic fluid. उसके literature में नहीं लिखा होगा, this is my, मेरा publish हो रहा है paper 27 papers, मैंने कहा इसी section. The reason which I give in my literature is because there's already a small space and a fluid over there. अगर आप इसमें मेथोट्रेक्सेट डालेंगे, इसको इंजेक्ट करेंगे तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा. प्रेशर क्रिएट करने से यू कैन लीड टू द रप्चर ऑफ इट. सो बेस्ट इज आई टेक सम फ्लूइड आउट ऑफ इट और उतनी अमाउंट का मैं मेथोट्रेक्सेट इसके अंदर डाल दूंगा. ये देखिए मैंने उसको स्प्रे भी कर लिया यहाँ पे और ये बार बार मेथोट्रेक्सेट डाल दिया. एंड आफ्टर दिस वहीं पर रखिए आप पेरिडॉप्टर ऑन करें. आपकी आंखें उतनी सेंसिटिव होती थी पेरिडॉप्टर है एंड देयर इज नो हार्ट बीट. सो देन यू ब्रिंग द नीडल आउट, अदरवाइज स्टे देयर अगर आपको जरा भी शक पड़ता है. और ये पोस्ट प्रोसीजर बार सवाल थे. After about some time, you can see these video clips. Another case, there's the ectopic, there's the ovary. Ectopic की एक आइडेंटिफिकेशन है ट्यूमर की कि you must appreciate the normal ovaries. अगर normal ovary appreciate नहीं तो this may be ovarian that has comparatively better growth and less risk of rupture as the tumor. ये फॉलो पे किया, हार्ट भी खत्म, उसके बाद भी निकाले. सी सेक्शन का मार्क जो हमारा असल है. Why it is important? Because C section has got 3 things. I remember first case 96. One of my colleagues who was a professor now retired. He had 2 daughters. Now he came to me ultrasound तो मैंने कहा यार आपकी प्रेगनेंसी बड़ी लो नहीं. उसको C section का इतना रिवाज भी नहीं था, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं थी और रेडियोलॉजी भी बड़े शरीफ होते थे इन द सेंस में उनकी सुनते नहीं थे. बड़े बड़े बंदे कहते मुझे पता मैंने क्या करना है. नाउ इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड क्वालिटी सर्विसेज. नाउ वी वर्क टुगेदर एज अ टीम. तो मैंने कहा तुम्हारी प्रेगनेंसी बड़ी लो लाएंगे तो मेरे इसके लिए 3 चीज़ें मैं लिखता हूँ. नंबर 1, इट्स लो लाइंग है, इट्स गोइंग टू हैव प्लेसेंटा प्रीविया, इट्स गोइंग टू हैव प्लेसेंटा इंक्रीटा परफेक्ट. ये मैं 3 बातें लिख के दे दी तो गायनेकोलॉजिस्ट वाले तो उन्होंने स्माइल दी और क्या करने लगा कि यार ये क्या बात कर रही. दैट वाज अर्ली डेज ऑफ 97, 96. She was on the bed for 9 months or 8 months afterwards diagnosis. I said delivered one of the private hospitals. मैंने कहा यार देख लेना मेरा तो एडवाइस दे ना वो है क्योंकि उस जमाने में इतनी ज़्यादा पेरिडॉप्टर पॉपुलर नहीं हुई थी 96, 97. Unfortunately, professor of surgery that was the assistant professor my colleague. She ended up with the surgery and she ended with hysterectomy and she ended with 15 pints of blood. Being surgeon, he was on the spot, the professor of urology was on the spot, and professor of gynae was on the spot. So take a message कि आज अगर आप इसको मैनेज नहीं करेंगे तो there is a risk of all these complications. ये है systemic effect देने के alopecia, pneumonitis, bone marrow, all that. C-section scar mark. Preferably the patient has to be hemodynamically stable. करती उसमें जो stable होता है और ये ट्यूबल में हमारा रिस्क होता है परफेक्ट हम करते हैं. इस C-section की complication. There are 2 types of C-section ectopic. Very very important. हर एक C-section को वेरी करनी उसकी डायरेक्शन क्या है? एक्सोजेनिक, एंडोजेनिक. इज गोइंग आउटवर्ड्स. अगर ये आउटवर्ड जा रही है तो कल कोई ब्लैडर को पकड़ेगी और उसको भी साथ साथ इन्वॉल्व कर लेगी. दैट इज द वन व्हिच इज वेरी. हर पेशेंट का ऑन द स्पॉट बीट टेस्ट बिफोर माय प्रोसीजर इज मैंडेटरी. मैं इसलिए एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहा हूँ. यू लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक एंड यू डोंट मेक मिस्टेक्स. We used to get the BTC 4 दिन पहले कराया थी 22,300 आ गया. फाइन. आज मेरे पास आई मैंने उसका टीका लगा के उसका ट्रीटमेंट कर लिया. 4 दिन मैंने BTC कराया तो वो जी 40,000.
50 आ रही है. From 25, after 4 days of procedure, the BTC level is 50,000, 40,000. तो मैं I am bad cow. ये आपने किया क्या फिर? Why it is happening right every day after 24 hours the BTC level is going to double. सबको पता है. उसका BTC level by the time मेरे पास आज ही तो टोटल नहीं था. It must be 60,000 जो मैंने चेक नहीं कराया. Now I don't know the procedure till I do this spot BTC level कि मैंने follow करा. Number 2, don't get the BTC level immediately after 24 hours. कोई excited होने की जरूरत नहीं है. Hold down, wait for it because आपने जब किया but level थोड़ा सा बढ़ रहा हो. Wait for 4 to 5 days. पटी साहब को चाय पिलाएं, शहजाद पटी साहब को. Preparation of the patient. आइडलाइन जैसे मैंने कहा प्रयासा रुकावट करें. Procedure क्या है? My rule of thumb is 0.3 cc potassium chloride. I always give it the fetal heart. Then spray 2 cc of the amniotic fluid and then give 2 cc of methadone. It is so successful. Look at this picture, beautiful image. ये सारी यूट्रस शीट पड़ी है यहाँ पे आ गए. And the total thickness is less than 3 millimeter. But heartbeat is there. ये जस्ट मैं आपको वीडियो वो जो पहले इमेज दिखाया था उसमें मैं आपको वीडियो दिखा देगा. जस्ट शो यू वन ऑफ द केसेस एंड फिनिश इट. Now look at this case, same. ये internal loss sitting on the top of it. And that's a thin membrane. That's a thin membrane of the myometrium bed. ये जो बाकी जो white line आ रही है, ये decidual है. This is not the myometrium. ये thin myometrium आ रही है, ये वाली 3 millimeter. So high risk of exogenous pregnancy. 3-4 चीजें. अब इसके अंदर आपको देखिए कि नीडल अंदर जा रही है. TVS किया को locally लगाना because right on the top of the C-section वो नीडल अंदर आ गई. Look at this needle. You can all appreciate it coming in. फिर आपने 100% वेट लेना. Babies they are as sensitive as you and me. आपकी सुई भी यहाँ पे लगाओगे तो फौरन आप हिलेंगे. ये उतने सेंसिटिव है. आज भी 12 हफ्ते पे, 4 हफ्ते पे, 6 हफ्ते पे, जितने मैं और आपकी स्किन सेंसिटिव है. डोंट अंडरएस्टिमेट दैट. बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं इमीडिएटली जब गुजरा सी सुई लगती है तो भाग के उधर से वेट टिल यू आर जस्ट टचिंग. नाउ लुक एट दिस. आई एम गेटिंग इन fetal heart. Look at this. जहाँ पे है तो कुछ आपने थोड़ा सा तेजी से जाना उसके अंदर. Look at this. No, I mean, जब अंदर आ गए हैं तो फिर उसको आगे डांस भी कराएं. Verify yourself. Yes, you are right on the target, and now the baby cannot move. Is the beauty behind that is कि फिर आप 0.3 cc में देंगे तो सक्सेस होगी. Otherwise, you will be spreading in the free space and you won't get the target. Now look at the drops coming in, and these are drops of injection. Potassium chloride is 0.3 cc, and the heart rate goes immediately within seconds. उसमें हार्ट खत्म हो जाएगा. अब उसको कंफर्म करें. उसी रुकत पाई थी पर डॉक्टर टेस्ट. मैंने कहा आपकी आंखें उतनी अच्छी नहीं है जितनी मशीन की पर डॉक्टर टेस्ट. विशेष कर मशीन आपकी अच्छी होनी चाहिए. फिर आप क्या करना है? आप वाले फ्लूइड एस्पिरेट करना है. कितना बड़ा फ्लूइड है ऊपर से मैं और डाल दूंगा तो प्रेशर के साथ उसकी रिकवरी पीरियड बढ़ जाएगा. नंबर 2 उसका रिस्क ऑफ परफोरेशन ना हो. वो मैंने एस्पिरेट कर लिया. सारा फ्लूइड निकल गया. थोड़ा हालांकि बंदे लाइटें ऑफ नहीं की मैंने. गुजारिश नहीं की आप सारी ऑटो है. सारी लाइटें ऑन तो सारी बुझा है. एवरीबडी भी सिटिंग क्वाइटली. नॉट वरी. कोई अलग नहीं होगा. इसलिए कि रेडियोलॉजी की स्क्रीन के हमने जब प्रोफेसर सीखा हुआ बुजुर्गों से कमरा बंद करके छोटी सी 0 वाट की लाइट जला दें ताकि शक्लें नजर आती हैं. अगर जो आप में से मेरे को सक्षम कराए होंगे या पति साहब बचाएंगे तो सारे ठेले बैठे होते थे. 0 वाट का बल्ब होता है जस्ट टू सी व्हाट वी आर डूइंग इट बिकॉज यू कांट सी द इमेज. ये ग्रे स्केल है. ये ग्रे स्केल जितनी लाइट देंगे इसको फेंकेंगे उतने मजबूर होगा. आप इसकी लाइट ऑफ करें. लुक एट द ब्यूटी हाउ आई एम गोइंग टू शो बिकॉज मुझे नजर आ रहा है इतना क्वालिटी बट दिस लाइट इज नॉट गोइंग टू. रेडियोलॉजी है ये देर वाला काम. Now look at this. Now I'm giving methotrexate into the amniotic fluid, not the fetal heart. Fetal heart में मैंने पोटेशियम क्लोराइड डाला. फिर मैंने उसको निकाल लिया. Thank you very much. Now look at the quality of the image they are. मुझे भी लाइट की जरूरत नहीं है छोटे भाई. Now look at the next patient. Just to show you a couple of cases. ये recently किया 29/8. आज के तरीके में 2 माह बनी हुई है. Heartbeat is there. Now look at the steps. Just want to show you the step. ये नीडल अंदर जा रही है. नीडल गोइंग इन. चली गई. आप इस पे आ जाए. ये इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड. Look at the few drops coming over there. And then small amount of fluid is aspirated. And that is the injection methotrexate given. Look at the white dots एकदम. सारे नजर आना शुरू हो गए. So now you complete the procedure. And then you check with the current Doppler. There is no current Doppler. That means the heartbeat is gone. And that's follow-up. Look at this. 29/8 को हमने प्रोसीजर किया.
Look at the quality, the way it grows fast. And 5-9, कितने दिन बाद, 8 दिन बाद, look at the very small residual reaction which is left over. Similarly, this was a very difficult case. We done just recently, very difficult case in the sense कि इसकी यूट्रस बहुत बड़ी थी और इसकी जो सर्विक्स थी वो बहुत लंबी सर्विक्स थी. तो 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर मेरी टीवीएस से एक्सेस नहीं आ रही थी. तो मुझे फिर ऊपर से जाना पड़ा, एब्डोमेन से नीचे जाता तो मैं आसन ब्लैडर को भी ट्रामाटाइज करता, गुजर जाता. सो एवरी पेशेंट हैज हिज ओन क्राइटेरिया लिमिटेशन का अपने कहा है. फिर इसको है सी सेक्शन 90% गो बाय टीवीएस रूट. यहाँ नहीं जा सका बिकॉज वेरी लॉन्ग सर्विस के 3-4 मेरे बच्चे थे. अब प्रेगनेंट तो सी सेक्शन चलेंगे. फिर मैंने क्या इसकी मैंने एब्डोमिनल रूट में किया. लोग कहते हैं एब्डोमिनल रूट ये टीवीएस की मछली है. यहाँ पे देखिए चला गया, ये भी चला गया. अब आपको प्रोसीजर आने शुरू हो गए. Look at the white dot needle coming into it. Look at this is coming into potassium chloride. Look at the space. कितना पानी ना निकालें कि आपको उसका स्पेस नजर ना आए. कितना निकालें कि you should remain in the space, ब्लैक होल के अंदर रहे ताकि आपके जब दोबारा मैथोट्रिक्स से डालें तो आप किसी और जगह को मूव ना कर दें. And there you get the injection methotrexate. And look at the result. But sir, you appreciate that? It's a long service. बड़ा मैंने छोटा करता हूँ. Just in a matter of a few days. Just one more case, and I'll just show you how the things are getting up better. Again, it is gone completely clear. ये सबसे इंटरेस्टिंग केस में दिखाना. ये खातून एक आई, बड़ी शरीफ सी थी. तो she had one baby, and now her husband is Spain. तो उसके एक्टोपिक डायग्नोज की तो मैंने उसको इंजेक्शन लगा, उसको ट्रीटमेंट किया. तो बुखारी सब मेरे पास वहाँ लाहौर में रही कोई 2-3 हफ्ते में उसको फॉलो किया. लेवल वॉज फॉलोइंग डाउन. टीचर थी, उनकी जॉब का थी, रेवेन्यू में जॉब. कहती मेरा हस्बैंड में स्पेन जाना है. मैं कह बीबी अवॉइड द पेशेंट, टेल द पेशेंट कैटेगरी फॉर 2 थिंग्स. डोंट मीट द हस्बैंड टिल द बीटीएस लेवल गोज लेस देन 5 नैनोग्राम बिकॉज ऑलरेडी एक्टोपिक हैज रीच्ड नाउ. लेकिन मिरेकल्स कैन हैपन अगेंस्ट द बुक्स. कहते हैं डिजीज किताब पढ़ती है, किताब डिजीज नहीं पढ़ती. सर बुक्स आर नॉट अंडर योर ऑब्लिगेशन. सर डिजीज इज नॉट अंडर ऑब्लिगेशन. ये उसने मुझे स्पेन से इमेज भेजा. इट्स नॉट पाकिस्तान इमेज, फ्रॉम द स्पेनिश में. देखिए वहाँ मुझे आई तो मेरे पास आई तो बीटा लेवल वाली वेरी डाउन. विद इन 4 वीक्स इट हैज गॉन डाउन. देन शी वेंट टू स्पेन. वहाँ चली गई तो कहती डॉक्टर साहब मैंने यहाँ बीटा सीख कराया. 2 हफ्ते बाद वो फिर पढ़ना शुरू हो गया. तो आपने क्या किया? और मैंने नहीं किया था. शी वॉज प्रेगनेंट दिस टाइम. So the level came so fast down, so it was she got pregnant and yes, she pregnant the uterus. Right? So there is a very fast level, but that is not every case. So keep on following and keep them advice to avoid the level fetus level goes down. ये मैं दिखाना चाहता हूँ. प्लीज इस चीज को बड़ा गौर देखें कि जब आपको सी सेक्शन ऑफ टॉपिक हो तो उसकी डीएनसी बड़े ध्यान से करें. सर्जरी तो उसकी होनी चाहिए, बहुत ध्यान से करें बिकॉज इट्स सो so fragile thin wall. You lead to a lot of hematomas and sometimes you end up with a perforation and you end up with the surgery afterwards. These are just the things which happen after your complete resolution. Yes, cervical. One of the girls very